Now we had completed asexual reproduction in unicellular organism and in multicellular organism. So the asexual reproduction is over and now sexual reproduction will start. The asexual reproduction unicellular multicellular का खत्म हो गया, अभी sexual reproduction start होता है. इसमें दो germ cell, in this two germ cells are there. What are these two germ cells? Male gamete and फीमेल गैमेट. तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में दो जर्म सेल्स इन्वॉल्व है और दो जर्म सेल्स का नाम क्या है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट. नाउ इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देयर आर टू प्रोसेसेस. फर्स्ट वन इज गैमेट फॉर्मेशन. तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में दो प्रोसेसेस रहता है. फर्स्ट वाला है गैमेट फॉर्मेशन. इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कैसे बनता है? मियोसिस से. So by meiosis, the male gamete and the female gamete is formed. What is the meaning of meiosis, which you had studied in lesson number 2? Here the number of chromosomes gets reduced to half. Gets reduced to half. तो gamete formation में क्या होता है? Male gamete और फीमेल गैमेट कैसे बनता है? मियोसिस से बनता है. मियोसिस सेकेंड लेसन में पढ़ा था. इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ में रिड्यूस हो जाता है. सेकेंड प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. सेकेंड प्रोसेस का नाम क्या है? फर्टिलाइजेशन. इसमें मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट unite to form what? Zygote. The number of chromosome in male gamete was half, that is why it is known as haploid. Male gamete and haploid female gamete. तो number of chromosome यहाँ पे half है मेल गैमेट में और फीमेल गैमेट में, इसके लिए इसको हैप्लॉइड बोलता है. और ये जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, हैप्लॉइड मेल गैमेट और हैप्लॉइड फीमेल गैमेट यूनाइट होता है तो डिप्लॉइड zygote बनता है. So a diploid zygote is formed by the union of haploid male gamete and haploid female gamete, and this diploid zygote undergoes mitotic division to form embryo. तो मेल zygote जो रहता है वो mitotic division से embryo बनता है. This is single cell and it will break up into number of cells to form embryo, and this embryo later on grows into form a new individual. So when the haploid male gamete and a haploid female gamete unite to form diploid zygote, and this diploid zygote undergoes mitotic division to form embryo, and the embryo grows up into a new individual. अब ये haploid male gamete, number of chromosomes male gamete में female gamete में haploid होना बहुत ज़रूरी है. We know that in human being there are 46 chromosomes. This we had discussed in the lesson number 2. So when it get reduced to half, so the male gamete will be having 23 chromosome and the female gamete will be having 23 chromosome. When they both unite, the diploid zygote will be having 46 chromosomes. So it's very important कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट हैप्लॉइड होना बहुत ज़रूरी है, या नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस होना बहुत ज़रूरी है हाफ में. और जब ये यूनाइट होता है तो अपना ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर्म होता है. अगर ये हैप्लॉइड नहीं होता, इफ द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट विल नॉट रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, देन व्हाट विल हैपन? दिस विल बी हैविंग 46 क्रोमोसोम, दिस विल बी हैविंग 46 क्रोमोसोम, both together will be having 92 chromosome, and this will lead to abnormality because in human being there are not 92 chromosome, only 46 chromosomes are there. Now in sexual reproduction, just now we had discussed that male gamete and the female gamete unite to form the zygote, and the zygote by mitosis it leads to form embryo, and the embryo gives, due to the growth of the embryo, it leads to a new individual is formed.
Now because of the recombination of the genes of both the parents, the new individual will be having some characteristics similar to their parents, and some characteristics which is different from their parents. And because of this occurs. Why? Because of the genetic variation, which leads to diversity. Now because of genetic variation is very important. Why? The new individual is able to survive in the changing environment. The environment keeps on changing, and diversity helps the individual to survive in this changing environment, and thus its existence is preserved and prevents it from getting extinct. तो फीमेल गैमेट और मेल गैमेट जो यूनियन होके जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रॉय बनता है, एम्ब्रॉय से न्यू इंडिविजुअल बनता है, और ये न्यू इंडिविजुअल रिकॉम्बिनेशन, दोनों पेरेंट्स का रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स ऑकर, इसके लिए न्यू इंडिविजुअल में अगर देखा जाए तो कोई कैरेक्टरिस्टिक जो रहता है वो पेरेंट्स से सिमिलर रहता है, लेकिन कोई कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स से एकदम डिफरेंट रहता है, और ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक मिलके इसको बोलते हैं जेनेटिक वेरिएशन। और ये जेनेटिक वेरिएशन क्या फॉर्म होता है? लीड्स टू डाइवर्सिटी। जेनेटिक वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट जो रहता है वो अपना जो वातावरण है हमेशा चेंज होता रहता है, तो जेनेटिक वेरिएशन इन चेंजिंग एनवायरनमेंट में सरवाइव करने हेल्प करता है और एक्सटिंक्ट नहीं होता है। वो जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल उसका एग्जिस्टेंस प्रिजर्व करता है और एक्सटिंक्ट नहीं होता है, मतलब ख़त्म नहीं हो जाता है। इसके लिए रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक वेरिएशन की वजह से डाइवर्सिटी होता है, और ये genetic variation helps the individual to survive in the changing environment. Now sexual reproduction in plants. Now sexual reproduction unit, which is an important unit of sexual reproduction in plants, that is flower. The flower जो रहता है वो sexual reproduction unit है plants का। इसमें 4 whorls है, there are 4 whorls in the flower. What are they? Corolla, calyx, Androecium, and Gynocium. Now Androecium and Gynocium are known as essential whorl. जो Androecium और Gynocium है उसको essential whorl बोलते हैं। तो फ्लावर में 4 whorl होता है, Corolla, calyx, Androecium, Gynocium, और एंड्रोशियम और गाइनोशियम को एसेंशियल whorl बोलता है बिकॉज दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। तो वाई इसको दोनों को एसेंशियल whorl क्यों बोलता है? बिकॉज दोनों भी रिप्रोडक्शन का फंक्शन परफॉर्म करता है। और करोला और कैलिक्स को क्या बोलता है? एसेसरी whorls. दे आर नोन एज एसेसरी whorls. वाई? Corolla and calyx are known as accessory whorls because they do the function of protecting the inner whorl, that is Androecium and Gynocium. तो Corolla और calyx जो रहता है वो inner whorls को protect करता है, जैसे कि Androecium और Gynocium को protect करता है, इसके लिए उसको accessory whorls बोलता है। Now this is Corolla, the red one which I have drawn is known as Corolla. They are also known as petals. They are of various color. तो इसको Corolla बोलता है, Corolla को petals भी बोलता है, वो अलग अलग कलर्स में आता है। This is known as calyx. Calyx is also known as sepals.
दिस इज ग्रीन इन कलर। तो ये जो पार्ट है इसको बोलता है सेपल्स, और सेपल्स को कैलेक्स बोलते हैं और ग्रीन कलर का होता है। और ये जो नीचे स्टॉक है, देयर इज वन स्टॉक बिलो द फ्लावर, दैट इज नोन एज पेडिसल। If the flower is having a stalk, for example in this flower it is having a stalk, it is having a pedicel, so that is why it is known as pedicellate flower. But if stalk is absent or pedicel is absent, then it is said to be sessile flower. तो अगर पेडिसल या ये डंडा या स्टॉक है तो उसको बोलते हैं पेडिसलेट फ्लावर, और अगर स्टॉक एब्सेंट है फ्लावर में तो उसको बोलते हैं सेसाइल फ्लावर। अभी ये है स्टिग्मा, दिस इज नोन एज स्टिग्मा, this is known as style, this is known as ovary, and all this together is the gynocium. The members of the gynocium are known as carpels. Now this is the anther, and this is known as the filament. So इसको anther बोलते हैं और इसको filament बोलते हैं, and both together is the androecium, not gynocium, androecium. The anther or filament को together is known as androecium, and the members of the androecium is known as what? Stamens. This is a male part of the flower, and this is a female part of the flower. Once again I'll repeat. The four whorls of the flower are corolla, calyx, androecium, gynocium. Androecium and gynocium are the essential whorl because they perform the function of reproduction. Corolla, calyx are the accessory whorl because they perform the function of protecting the inner whorl, that is the gynocium and androecium. This is known as corolla, which is of various color. It is also known as petals, and this is known as calyx, that is a green one. It is also known as sepal, it is green in color. Sometimes the flower has a stalk which is known as pedicel. If the flower has a stalk, then it is said to be pedicellate flower, and if they don't have a stalk, then it is said to be sessile. Now gynocium, the members of the gynociums are known as what? Carpels, and they are the female part. What does it consist of? Stigma, that is this one. This is the style, and this is the ovary. Now androecium is a male part of the flower. The members of the androecium are known as stamens, and what are they? This is the anther, and this is known as the filament. Now there are bisexual and unisexual flowers. Sometimes in this flower, if you see, that is a hibiscus or shoe flower. In this, androecium and gynocium are both there in the same flower. If they both are there in the same flower, then it is said to be bisexual flower. तो अगर फ्लावर में दोनों भी एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों भी एक ही फूल के अंदर है तो उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसा कि ये फूल में देखा जाएगा तो दोनों भी एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों भी एक ही फ्लावर के अंदर है तो उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। लेकिन कभी कभी the androecium is in different flower and the gynocium is in different flower. So sometimes the androecium is in different flower and the gynocium is in different flower, then it is said to be unisexual flower. तो कभी कभी एंड्रोशियम अलग फूल में रहता है और गाइनोशियम अलग फूल में रहता है तो उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। फॉर एग्जाम्पल पपैया। तो पपैया प्लांट में एंड्रोशियम फ्लावर या मेल फ्लावर अलग होता है और फीमेल फ्लावर अलग होता है तो इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। नाउ दिस पार्ट आई हैव शोन ओवर हियर, that is the gynocium, stigma, style and ovary. Here stigma, this is known as stigma, this tube is known as style and this whole thing is known as ovary. तो ये जो पार्ट है वो मैंने यहाँ पे बताया है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, स्टिग्मा, style or ovary. Now inside the ovary there are one or many ovules are there. These are known as ovules. So inside the ovary what are there? Ovary के अंदर क्या है? एक या एक से ज़्यादा ovules रहेगा. तो this is the gynocium part or the female part of the flower. तो इसको gynocium ने तो female part of the flower का figure बनाया है. अभी मेल पार्ट या एंड्रोशियम
ये है एंथर और ये है फिलामेंट जो पहले अपन पढ़ चुका है. सो दिस इज द एंथर एंड दिस इज द फिलामेंट. In the anther there are powdery like structure, yellow powdery like structures are there, and these powder is known as what? Pollen grains. Now one pollen grain, if you observe under microscope, it looks like this. Inside the pollen grain there are two male gametes. तो अगर ये एंथर में क्या रहता है, येलो कलर पाउडर जैसा स्ट्रक्चर रहता है, पाउडर को क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन्स. एक पोलन ग्रेन इस तरह दिखता है. पोलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमेट्स रहता है. Now when the pollen grains from the anther falls on the stigma, so when the pollen grain from the anther is transferred to the stigma of the gynocium, then it is known as pollination. During the pollination the stigma becomes sticky and the pollen grains get stuck on the stigma. तो जो एंथर में जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होना चाहिए. जब पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होता है तो उसको बोलता है पॉलिनेशन. और पॉलिनेशन के टाइम में स्टिग्मा एकदम स्टिकी हो जाता है और पोलन ग्रेन उसमें चिपक जाता है. सो द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज़ नोन एज पॉलिनेशन. नाउ हाउ डज दिस पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा? अब ये पोलन ग्रेन एंथर में से स्टिग्मा तक कैसे जाएगा? इट इज़ डन बाय आइदर अबायोटिक एजेंट्स like the wind and water, or it is done by biotic agents like the insect and animal. Now when an insect sits on the anther, तो ये जो एंथर पोलन ग्रेन जो रहता है वो यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचता है? अबायोटिक एजेंट से, पानी और हवा के वजह से, नहीं तो बायोटिक एजेंट जैसा इंसेक्ट, नहीं तो एनिमल के वजह से. जब भी कोई इंसेक्ट इस एंथर के ऊपर बैठता है तो उसकी बॉडी पार्ट्स में सब पोलन ग्रेन्स चिपक जाता है और वही इंसेक्ट कोई स्टिग्मा के ऊपर आके बैठेगा तो वो पोलन ग्रेन सब स्टिग्मा में लग जाएगा. तो इट कम्स एंड फॉल्स ऑन द स्टिग्मा. सो व्हेन द इंसेक्ट कम्स एंड सिट ऑन द फ्लावर and its body get dusted with the pollen grains, when the same insect comes and sits on the stigma, the pollen grain is transferred to the stigma. So this is how the pollen grains are transferred from the anther to the stigma. Now this is a pollen grain. You can see over here the pollen grain is there with the two male gametes. As soon as it comes and falls on the pollen grain stigma, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा में आके गिरता है तो उसका जो टिप है वो ब्रेक होता है और एक ट्यूब निकलता है. सो यू कैन सी ओवर हियर इट अ ट्यूब इज फॉर्म एंड दिस ट्यूब passes through the style and reaches up to the ovules, and the male gamete is carried up to the ovule. You can see over here the male gametes are carried up to the ovule. Inside the ovule you can see by the red color I have drawn, inside the ovule there is a sac which is known as embryo sac. तो जब भी पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आके गिरता है तो उसका जो टिप है वो टूटता है और उधर से एक ट्यूब निकलता है और ये ट्यूब में से मेल गैमेट पास होता है. ये ब्लू कलर में बताया, ट्यूब जो रहता है वो अप टू ओव्यूल्स तक जाता है और मेल गैमेट्स को वहाँ तक पहुँचाता है. और ये ओव्यूल का अंदर एक सैक है, उस सैक को क्या बोलता है? एम्ब्रॉय सैक. सो दिस इज नोन एज पोलन ट्यूब and these two are known as male gametes. So two male gametes in each pollen grain is transferred up to the ovules. Now if you see inside the ovule, अगर ओव्यूल का एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा जाएगा तो इस तरह है. सो इन द ओव्यूल देयर इज वन फीमेल डिप्लॉयड हैप्लॉयड एग शेल. This is known as synergid. These two are known as polar nuclei, which is also haploid. And these two which I have shown in blue color, that is a male gametes. तो अगर अपन ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेगा तो इस तरह रहता है ओव्यूल का स्ट्रक्चर. ये एग शेल है, एग शेल के अंदर हैप्लॉइड एग शेल है
और ये पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई रहता है, वो भी हैप्लॉइड रहता है। और ये मेल गैमेट जो रहता है इट फ्यूजेस विद द एग शेल, सो वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग शेल टू फॉर्म zygote, to form a zygote. So one male gamete fuses with the egg shell to form what? Diploid zygote. The other male gamete fuses with the polar nuclei, 2 polar nuclei, to form endosperm, which to form the endosperm. Since 2 polar nuclei is uniting with the male gamete, it is known as double fertilization. I'll repeat once more. 2 मेल गैमेट ओव्यूल के अंदर आता है, एक मेल गैमेट जो रहता है वो एग शेल, एप्लॉइड एग शेल के साथ यूनाइट होता है और क्या बनता है? जाइगोट। और दूसरा मेल गैमेट जो रहता है वो पोलर न्यूक्लिया, 2 पोलर न्यूक्लिया है उसके साथ यूनाइट होता है टू फॉर्म एंडोस्पर्म, इट फॉर्म्स एंडोस्पर्म। Since male gamete fuses with 2 polar nuclei, since it fuses with 2 polar nuclei, it is known as double fertilization. Now, if the pollen grain is transferred from this flower to the stigma of this flower, now अगर pollen grain ये flower से लेके stigma, ये flower का stigma में चिपक जाता है तो it is known as self pollination. That means if the pollen grain is transferred from one flower to the stigma of another flower of the same plant, ये दोनों भी flowers एक ही plant के ऊपर है तो उसको बोलते हैं self pollination। लेकिन अगर pollen grain is transferred from one flower to another flower of the same species, तो अगर pollen grain इधर से ये फूल में गया जो दूसरे plant में है लेकिन same variety का है तो उसको बोलता है cross pollination। जब भी पोलन ग्रेन एंथर में से स्टिग्मा में जाता है तो उसको पॉलिनेशन बोलता है। अगर एक फूल से एंथर पोलन ग्रेन जो रहता है वो एक फूल से दूसरा फूल सेम प्लांट में रहता है तो उसको बोलता है सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर एक फूल से दूसरा फूल जो दूसरे प्लांट में है सेम वेराइटी का है तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम वेराइटी? रोज फ्लावर का पोलन ग्रेन कैन नॉट गो एंड फॉल ऑन अ शू फ्लावर, both should be a rose or both should be a shoe flower. So if the pollen grain from the one flower falls into another flower of the same plant, then it is known as self pollination. And if the pollen grain from one flower goes and falls into another flower of another plant of the same variety, then it is said to be cross pollination. And now if the pollen grain of a shoe flower goes and falls on the pollen stigma of the rose flower, then it's of no use, fertilization will not take place. It is very necessary that the pollen grains of a shoe flower should fall on the stigma of a shoe flower or the pollen grains of rose flower should fall on the stigma of the rose flower. ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों भी फ्लावर सेम रहना चाहिए, या तो दोनों शू फ्लावर रहना चाहिए या दोनों भी रोज रहना चाहिए। अगर पोलन ग्रेन्स रोज फ्लावर का जाके शू फ्लावर का स्टिग्मा में गिरेगा तो इट्स ऑफ नो यूज़, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। ये येलो ग्रीन वाला को क्या बोलता है? एंटीपोडल। Now when the male gamete fuses with egg shell, then it is known as what? Fertilization.